Hello and welcome to a very special bulletin. I am Pooja Prasanna from the News Minute, and joining me from the studios of Newslaundry is my colleague Basant Kumar. If you're wondering why we're here, what we're doing, let me quickly tell you. We're here every single day to bring you updates that are verified. Because at times like these, when there's escalated tensions between two countries, when there is a conflict, the role of media to keep the public informed is that much more. And we see many people in the media slipping up in this job. So we decided that several times every single day, we'll come to you with short bulletins where we'll give you only what is verified by the army or verified by the Indian government. No spin, no exaggeration, no bravado, just facts. And not just us from the studio, we'll also have a team of reporters bringing you live reportage from Jammu, from Srinagar, and other parts where the conflict is unfolding. Just another thing before we get started. Many of us, we had a bulletin at 2 o'clock as well, and many people did ask us why we're doing a bilingual bulletin. But let me tell you, we will be slipping into Hindi and English because this is a bulletin that we're producing together. This is a joint exercise by the News Minute, Newslaundry, and Scroll. We have our reporters everywhere, and we can only produce one bulletin together. So do bear with me, but you will not miss out on anything, whether you can understand English or whether you can understand Hindi. Also, let me tell you quickly who are the reporters who will be joining us in less than 5 minutes from now. We will have a special correspondent from Scroll who will be joining us from Srinagar. His name is Safad Sargar. Nidhi Suresh and Anmol, both of our reporters, correspondents from the News Minute and Newslaundry, will be coming to us live from Jammu city. Let's get on with the latest updates. This is something that we've kept track of in the last few hours. The daily press briefing was held by Foreign Secretary Vikram Mishra, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh. And this is what they've told us, that Pakistan has struck targeted place of worship with a particular design. They went on to say that this is a low even for Pakistan. Vikram Mishra said that Pakistan has resorted to hitting gurudwaras, temples, and convents. And I quote what he said: "We've seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This is a new low even for Pakistan." And during heavy shelling in the early morning of May 7th, that is yesterday, a shell fired by Pakistan landed behind the Christ School. This is run by Carmelites of Mary Immaculate, a congregation in Poonch, and also a shell hit the home of two students, and both of them tragically lost their lives. Their parents have also sustained injuries. They are being treated. These are some serious injuries that they did sustain. Another Pakistani shell struck a Christian convent that is run by nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel. This also damaged water tanks and a solar panel close by. The school at the time was closed, thankfully, or, we don't know what could have ended up happening, what the damage could have been. Colonel Sophia Qureshi said that the Pakistani side employed heavy caliber weapons along the line of control, and also attempted multiple drone based on intrusions from Leh to Sir Creek. पूजा नमस्कार। जैसे कि आज हमने सुबह बताया था, जो पहली लाइव हुई थी, कि आज से यानी 9 मई से हम जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, उसको लेकर छोटा-छोटा अपडेट लाएँगे, जिसमें शोरगुल नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, अविश्वसनीय खबरें नहीं होगी, हम कहानी नहीं बनाएँगे। तो और हमने ये भी कहा था कि आने वाले समय में रिपोर्टर भी हमसे जुड़ेंगे, तो अभी हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, अनमोल, निधि और एक दूसरे साथी अलग-अलग शहरों से, जम्मू एंड कश्मीर से। जैसा कि आपने बताया कि आज विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और दिल्ली के जो विदेश मंत्रालय का दफ्तर है वहीं पर, और उसमें जानकारी दी गई, जैसा आपने कहा, कि 36 जगहों पर लगभग 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तानी सेना के द्वारा दागे गए। जो इंफॉर्मेशन में बताया गया, उसमें ये बताया गया कि ये जो है प्राइमरी जो जांच हुई है, प्रारंभिक जांच, वो ड्रोन तुर्की के हैं, और वो सोंगर नामक मानव रहित हवाई लड़ाकू वाहन पर लगे होते हैं, जिसे तुर्की में एसिस गार्ड द्वारा बनाया गया है। ये, और साथ में विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षकों पर सशस्त्र ड्रोन दागे, और एक ड्रोन ने एडी रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान
इस बार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। जबकि पाकिस्तान भारत पे आरोप लगा रहा है, लेकिन विदेश मंत्री ने कहा कि भारत उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कल भी उन्होंने जब 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने एक दिखाया था हाथ में कि ये तस्वीर है जो पूंछ में जो गुरुद्वारा है वहाँ पे हमला हुआ है और 3 लोगों की जान गई है। आज भी उन्होंने वो रिपीट किया और साथ ही कहा कि 2 ईसाई कॉन्वेंट को भी निशाना बनाया गया है। तो ये आज जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये जानकारी सामने आई है। Just a couple of quick updates before I go across to our reporters. Now, Murli Nayak, a 25-year-old soldier from Sri Satya Sai district of Andhra Pradesh, has been killed in action. He was killed in cross-border firing by Pakistani forces along the LOC in Jammu and Kashmir on Thursday night, May 8th. The Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, did pay a visit to the family and offered the condolences. The parents of Murli Nayak, received the chief minister and accepted the condolences. I will now go across to Nidhi Suresh, who's joining us from Jammu. Nidhi, Hi, can you Pooja. hear Can you hear us? me? Yeah. Yes, I can, loud and clear. Nidhi, I see that you're standing on a seemingly deserted road. Do tell me what's happening around you. Pooja, can you hear me? I seem to have lost the audio. If Nidhi, I was asking you to Yeah. describe what's happening around you. The road looks quite deserted. Where are you and Yeah. tell us what's So happening? So we drove today from Delhi to Jammu. We tried to make it to Jammu city before it got too dark. So we reached around 7 p.m. As we drove into the city, what we really saw was an entirely eerie city. People are staying indoors. Shops have been shut. My colleagues who are reporting from here and have been here for the last few days said that shops are now getting shut by around 5:36. People are not stepping out at all. Apart from medical shops, everything is shut. Even our hotel staff, we just checked in, told us that we have to keep our lights off. What we also know is after a really tense night yesterday, everybody we've spoken to here said that the tension is extremely high in the city today. It's quite palpable in how deserted the entire region really looks. And also, what we know is that schools have been shut for the next few days. The education minister has said that she will keep schools shut and a decision will be taken on Monday after reviewing the security situation. There's also a lot of stranded people in Jammu who for whom trains were arranged today. Three special trains from Jammu and Udhampur were arranged to move stranded people out of the cities. Apart from that, the weather has also been acting up. So the National Highway 44, this is the NH 44, which connects Jammu to Srinagar, has also been shut because of rainfall and landslides. So in short, there are people who are stranded in Jammu, tourists, migrant workers who are now wanting to leave the city. The state is trying to make arrangements, but there are people stuck here, and the city itself is quite deserted as of now. Nidhi, there's another bit of information we've picked up that people who are displaced and are being evacuated from areas like Rajouri and Pooch, which saw heavy shelling from Pakistani side, they're being brought to camps in the outskirts of Jammu. Can you confirm that for us? And what more can you tell us? Yeah, so we are currently in Jammu city, about 6 to 7 kilometers from here in the outskirts of Jammu city. We are being told that there are people who are coming in from Poonch who are evacuating border areas and coming looking for safety into camps. These are makeshift camps. Schools are being turned into camps where people can seek shelter. Anmol, my colleague, and I, we plan to go to them tomorrow to bring you in-depth coverage so that we can bring you the on-ground reality of what is happening in shelter camps. What are people doing? Where are they seeking shelter? Right. We're trying to get the scroll reporter from Srinagar on audio. He will be joining us on the phone line. I'm just asking our producers if he's online. Okay. Safat Zargar is joining us on audio. Safat, the conflict started in Kashmir. There is a lot of chatter about the conflict in other parts of the country. Now it's moved on to Punjab, Rajasthan, even Gujarat. But do tell us how people are preparing in Kashmir itself. Safat, can you hear me? We'll
We'll try and come back to Safat in just a bit. But we also have Anmol joining us from Jammu. Basant, over to you. Let's have a quick conversation with Anmol. आज जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें विंग कमांडर वेमिका सिंह ने ये भी बताया कि पाकिस्तान अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद नहीं कर रहा। उन्होंने बाकायदा पोस्टर दिखाया गया एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बताया गया कि जिस वक्त पाकिस्तान भारत पर ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा था उस वक्त भी हवाई जो वहाँ नागरिक विमान है उसकी यात्राएं चलाई जा रही थी। और कल जब ये खबर आई कि पाकिस्तान भारत के अलग-अलग स्थानों पे ड्रोन से हमले कर रहे हैं, उसमें कुछ पंजाब के भी इलाके थे। अनमोल, आप अभी दिल्ली से जम्मू के लिए निकले हैं, तो पंजाब होते हुए गए हैं। 2 चीज़ें बताइए कि आपका जो आने-जाने का रास्ता है, उसमें क्या चल रहा है? किस तरीके की जाँच हो रही है? किस तरह की स्थिति है? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि पंजाब में जो 8 मई की रात की घटनाएँ हुई है, उसका क्या असर देखा जा रहा है वहाँ के शहरों और गाँवों में जहाँ से आप गुज़रे हैं, जहाँ पे रुके हैं? हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे दिल्ली से, क्योंकि हमें शाम सूरज ढलने से पहले जम्मू पहुंचना था। तो हम वाया हरियाणा, जालंधर होते हुए लुधियाना और पठानकोट होते हुए हम जम्मू में आए हैं। तो इन जिन भी पंजाब के शहरों से हम गुजरे हैं, चाहे वो जालंधर हो, लुधियाना हो या पठानकोट तक आते आते हमने देखा कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में लग रही थी, सिचुएशन कंट्रोल में लग रही थी। एक शांति थी, और शांति के साथ ये कहेंगे कि एक सन्नाटा भी था, क्योंकि सड़कों पर जिस हाईवे से हम लोग आ रहे थे, उस हाईवे पे गाड़ियों की आवाजाही कम थी। जो गाड़ियां दिख भी रही थी वो लोकल्स गाड़ियां थी, और टूरिस्ट या फिर जो लोग जम्मू आते हैं ऐसी गाड़ियां कम दिख रही थी। और जब हम पठानकोट पहुंचे तो उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि सुरक्षा के इंतजाम वहाँ के बाद अ, वो काफी विजिबल थे, नोटेबल थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट था। और जब पठानकोट को हम क्रॉस कर रहे थे और जम्मू के जस्ट बॉर्डर एरिया में एक टाउन पड़ता है, अ, लखनपुर। इस टाउन पे जब हमने लोगों से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली से जम्मू की तरफ आने वाले या जम्मू से दूसरी तरफ जाने वाली गाड़ियों में और लोगों में, जो वहाँ के लोकल शॉपकीपर्स ने बताया, उन लोगों ने बताया कि अराउंड 80% की गिरावट हुई है अभी। मतलब जितना पहले आते थे उसका लगभग 20% लोग भी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जम्मू के हालात की बात करें, तो अ, जम्मू के हालात, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह का सन्नाटा है। दुकानें बंद हैं, एसेंशियल दुकानें कुछ कुछ खुली हुई हैं, मेडिकल शॉप्स, ग्रोसरी की शॉप्स कुछ खुली हुई हैं, और यहाँ पर स्कूल भी शट है। और हमें, यहाँ तक कि हमें भी होटल स्टाफ से बताया गया कि हमें अपने कमरे में अपनी लाइट बंद करके रखनी है। और जब हम बाहर, हम लोग ये अभी ये लाइव कर रहे हैं, तो भी हमें बताया गया कि जैसे ही एयर सायरन बजेगा लाइट चली जाएगी। और अ, मतलब ये जो स्ट्रीट लाइट जल रही है ये भी नहीं चलेगी, और पूरी सिटी में इस वक्त सन्नाटा है। जैसे कल शाम शाम होते-होते ऐसी घटनाएँ आने लगी थी, ऐसे हम्म, वीडियोज़ आने लगे थे जिसमें बहुत सारे फेक भी थे। अभी हम्म, जो जम्मू में जो लोग हैं, जिन दुकानदारों से आपने बात की, आज शाम की जी। क्या स्थिति है अगर आप थोड़ा बताएँ? कि सायरन बजाया गया है, क्या सुरक्षा के इंतज़ाम है, कैसे हैं? अगर थोड़ा आप साझा कर सकें। अभी हम करीब 1 घंटा पहले हम लोग जम्मू पहुंचे हैं। तो इस दौरान तो हमने कोई सायरन की आवाज नहीं सुनी अभी तक, और ना ही किसी तरह की वार्निंग आई है। और स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि लोग घरों में हैं, कोई भी बाहर बहुत कम, जिसको बहुत जरूरत है इक्का दुक्का लोग देखने को मिल रहे हैं। दुकानें बंद हैं, लोगों के घर बंद हैं, वो सब लोग अपने घरों में हैं। और जो लोग घरों में हैं वो भी, उनके लाइट्स ऑफ हैं। ऐसा लग रहा है कि इस शहर में कोई रहता ही नहीं। तो हाँ, यहाँ कुछ लोग जरूर हमसे मिले अभी थोड़ी देर पहले, जो ये बता रहे थे कि अभी जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, इस सड़क के ऊपर से भी उन्होंने ड्रोन्स को जाते हुए देखा था, और इस तरह की सिचुएशन वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। कल की बात करें तो। जी, पूजा जी। I think we have Safat back online with us. Safat, can you hear me? Safat Sarkar is a senior correspondent with Scroll, and he will be joining us from Srinagar as we just patch his audio through. He will be joining us on the phone line.
and he'll give us updates on what's happening in Srinagar and other parts of Kashmir right now. I'm just going to wait for a few more seconds to see if we can reconnect with Safat and if he can hear me. Safat? Okay. I think he has some issue connecting with us right now, but in our next bulletin tomorrow, we'll make sure that he joins us. Just a reminder that we will keep coming back to you with multiple bulletins every single day. So make sure that you tune into all of our channels. That's the News Minute, Newslaundry, and Scroll every single day, because we will come to you with multiple bulletins. And like I said, we do have reporters on the ground. Today, we had 2 reporters from Jammu. We'll also have reporters from Srinagar, and we'll have someone from Chandigarh joining us too tomorrow. But we can't end any bulletin without a reminder that there is a lot of misinformation and disinformation floating around. In fact, the Foreign Secretary Vikram Misri, I beg your pardon, said that Pakistan was spreading disinformation, that India had launched a drone attack on a Gurudwara. Of course, this was not true. But this goes on to show the kind of dangerous misinformation that is floating out there. What you can do is make sure that you don't believe everything that comes on your WhatsApp, on social media. Even some journalists, some news channels have fallen prey to this, because those who are spreading all this are even using AI. That's artificial intelligence, because it sometimes fake news looks real, it looks like news, but it's not. So you make sure that you verify everything before you spread it, before you forward it to people in your WhatsApp groups. That's what we can do. And on our part, I can assure you that we'll keep coming back with only verified information, things that are facts, nothing else. No opinion and no lies, no exaggeration. Thank you for joining us today. We'll come back tomorrow. Till then, stay safe and stay informed. जी, जैसा कि पूजा ने कहा कि हम फिर से आएंगे लाइव में, और साथ ही अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये कोशिश पहुंच सके। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है एकदम आग की तरह से, तो वो जनता तक पहुंचा, लेकिन सच्ची खबरें जो जमीनी हकीकत है वो नहीं पहुंच पा रही। तो हमारी इस कोशिश को आप आगे बढ़ाइए, लोगों तक साझा करिए। धन्यवाद। Sorry.